Hello, hi everyone. I hope you are able to see my screen. You can just give a quick confirmation in a chat window. Welcome to this live session, Build a Sales Dashboard by Data Skill Up. My name is Mohammed Shabbir and I will walk you through this entire Power BI report creation. All right. So there is a chat in a description. In a description, there is a link, download dataset link is already given. So if you want to do a practice along with me, you can definitely go ahead and download a data set. All right. So what we are going to do is we are going to create a Power BI report, something like this. So we are going to create a Power BI report, something like this, in the next 2 hours. First, we will understand the data set. We will understand the problem statement. We'll also understand how we can start, what are the steps involved. So data is already I've shared in a chat window. There is a Google Drive link from where you can download the file for the practice. Or I am going to use both language, Hindi plus English. So I'm sharing one more time. Yes, I've already shared in a chat window. Look at this now. There is a Google Drive link. You can download from here. Okay. Can you give me a confirmation if you're able to download this? All right. I can see people are again requesting, but quickly confirm. And I hope you're able to hear me clearly. No issue with the voice. All right. Done with the data download. Okay. So quickly give me a confirmation so that we can start. And it's a live streaming, so you will have a opportunity to ask me the question through the chat window. So once again, very good evening, everyone, and welcome to this Power BI live report creation by Data Skill Up. All right. Good evening, Robin, Abhishek. All right. So first of all, there is a PDF file. So let me explain you the problem statement. I'll be using both Hindi plus English language, so should not be a problem. So जो डेटा सेट हमारे पास है वो क्या है, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ट्रैवल नेस्ट इंडिया. You're working here as a Power BI developer reporting specialist. And what is the company background? It's a mid-size travel agency which operate across 10 major Indian cities. All right. और यहाँ पे क्या है कि एक इनके पास एक डेटा सेट है, बट द प्रॉब्लम इज इन्हें ये नहीं पता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन, वेयर यू दे नीड टू फोकस, how the booking is going on, which season they have a more bookings, do they need to hire some additional people in order to handle the customer queries, or how they can like scale their business. So there is a problem statement from the sales head. उसने क्या बताया कि यार हमारा जो एक एग्जीक्यूटिव है, he has to spend around 3 to 4 hours manually pulling all the data and then create a report, right? Then let's say you have been hired as a data analyst or a Power BI developer where you have to provide a end-to-end solution for this problem. So here what we are going to do is we are going to understand the data set, and then we are going to solve this, right? So I've given the link in a chat window. It's also there in a description, in a in a video description जहां से आप इसको download कर सकते हैं. And if you want to do a practice along with me, you can definitely do a practice. If you want to focus just as of now how I'm building this, then you can focus here. And later, after the session, the recording will be available. You can use the data set and definitely do the practice. And if you face any difficulty, anything, feel free to comment there. All right. Yes. So good to start now.
सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है कि नो रियल टाइम विजिबिलिटी, एजेंट परफॉर्मेंस इनविजिबल है, डेस्टिनेशन पैकेज की जो प्रॉब्लम्स है, हमें ये नहीं पता है हमारी कंपनी को कि भाई कहाँ पे फोकस करना चाहिए, राइट? देन यू कम्स इनटू पिक्चर, लाइक योर रोल कम्स इनटू पिक्चर. सो देर इज अ एक्सेल फाइल, ट्रेवल टूरिज्म डेटा सेट. There are multiple files. I'll walk you through each and every file one by one. So just pay attention on my screen. यहाँ पे एक हमारे पास एक एक्सेल फाइल है. उस एक्सेल फाइल में काफी सारा डेटा है. वी हैव टू कंबाइन दिस डेटा इनटू पावर बीआई एंड वी हैव टू क्रिएट अ मीनिंगफुल report, meaningful insights we have to provide to our business. So there are tables. Customer table, we have a customer table, destination, package, agent, date table, and a booking table, right? There are two type of tables. One is a dimension table and one is a fact table. So what does this mean? Fact table is something like this: fact booking. So whenever a new customer, whenever the customer is, like repeat customer is doing some booking, so the information is added here, like booking ID, booking date, customer ID, package ID, and then like how many people are traveling with that particular person, what is the price per person we have given, discount, and total revenue, status is what confirmed, or maybe the person has cancelled, or how the person has contacted us, what is a like a mode of कनेक्शन, हमें कैसे किया है कनेक्ट इसने, चैनल क्या था हमारा, व्हाट्सअप, वॉक इन, फोन, हाउ द पेमेंट हैज मेड, एंड व्हाट वाज द कस्टमर रेटिंग. ठीक है. Now, whenever the new customers comes, what we are doing, first of all, we are doing a registration of a customer. So we are asking the basic information from the customer, like the name, ID, gender, and from where he is coming, mobile number, and the email address. We have a list of destination where we are operating. So we have a 15 destination, out of which few are domestic, few are international. So we are operating this tourism, like company in a two different type of trip. One, एक है हमारे पास में domestic, एक है हमारे पास में international. What type of package we have? We have a different type of package, like we have a budget package, we have a premium, standard, and different prices according to the package, as well as destination के हिसाब से भी आपकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी. So for example, destination 3, which is a Rajasthan Royal tool, if you want to go through this a premium package, it costs around 35,000 per person, right? So who is the agent? Like we have a like people handling all these queries. So there are around 8 people who are managing all these things. They are from a different like we have a different setup in a different cities. So ये setup में ये लोग क्या करते हैं, लोग सारे जो है booking को handle करते हैं. And then we have a dim table, dim date table. Date table में हमने क्या किया है? The moment we started our like tourism company, from there we have a date called date table here, which includes all the dates, linear date, without any missing, and some additional columns here. All right. So ये हमारे पास में एक बहुत ही अच्छा rich data है, और इस data में हमें क्या करना है? We have to get this data inside our Power BI, and Power BI के अंदर में हमें report बनानी है. Now whether you are from a technical background or non-technical background should not be a problem. You will able to perform this if you will able to create this report if you are following step by step. For this you required a Power BI desktop. All right. Now ये Power BI desktop आप कहाँ से download कर सकते हो? Power BI desktop, in order to download the Power BI desktop, you can go to the Microsoft website. Just do here Google search Power BI download for Windows. It is available for Windows, and you can go to this first link here, and यहाँ की जो first step रहेंगे आपकी, यहाँ से आप अपने Power BI को आप यहाँ से download कर सकते हैं. I will share the link in a chat window. If anyone wants to download, they can download. There is absolutely no charge. और अगर आपके पास में ऑलरेडी पावर बीआई है तो वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट. तो जो जिप फोल्डर मैंने आपको दिया है, उस जिप फोल्डर के अंदर में काफी सारी फाइल्स है, जिसमें एक पीडीएफ है with the complete instruction what we have to do, an Excel file with all the data, a Power BI practice file. We are going to use this. There is a icon folder, there is a slide design, there is a AI prompt. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ. How you can create a prompt, how you can create a design using AI prompt, right? अब आप यहाँ पे देखोगे, इसको हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पे जो है डिजाइन को हम लोग जनरेट कर सकते हैं यूजिंग एआई. सो इट्स एब्सोल्युटली फाइन इफ इवन इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द पावर बीआई, आप जो है इसके बावजूद भी इसके अंदर में काम कर सकते हो. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस फाइल. सो प्रैक्टिस फाइल मैंने आपको ऑलरेडी दी है, और इस प्रैक्टिस फाइल को मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ. और यहाँ पे कुछ स्टेप्स है जो सबसे पहले हम लोग समझेंगे. स्टेप्स को, फाइल को ओपन करने से पहले देर आर 5 स्टेप्स.
and I can say there are total 6 steps. So very first thing is you have to save the file in a Power BI PBIS extension. Then there are 5 steps are involved: get data, data transform, data model and DEX, data visualization, sharing and collaboration. Now किसी भी Power BI की रिपोर्ट को अगर आपको बनाना है तो you have to follow these 5 steps, right? Get data is something like you are going to connect to your data source. Data transformation, if your data is not clean, definitely you have to do some data cleaning. So हम लोग एक्सेल के अंदर में इसको डेटा क्लीनिंग नहीं करेंगे, हम इसका जो डेटा क्लीनिंग है वो करेंगे, डेटा क्लीनिंग हम लोग करेंगे पावर क्वेरी के अंदर में. देन वी आर गोइंग टू बिल्ड अ डेटा मॉडल. डेटा मॉडल में क्या रहेगा, मल्टीपल टेबल्स रहेंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे, कनेक्शंस को बिल्ड करेंगे. DEX, in this particular live session I'm going to show you some example of a DEX as well. Like हम लोग जो है सेम पीरियड लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर का हम लोग कैसे कैलकुलेशन करें, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ. Data visualization, we are going to focus on different type of charts, formatting, how we can create a nice and beautiful report which gives some meaningful insights, and that will help your business to take some important decision. फाइनली हम लोग करेंगे शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन के ऊपर जाएंगे हम लोग. इसके लिए डेफिनेटली आपको पावर बीआई सर्विसेज यानी लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी. तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसको जो है वर्क स्पेस बना के पब्लिक लिंक क्रिएट कर सकते हैं. नाउ इंपॉर्टेंट पार्ट, इन ऑर्डर टू परफॉर्म द this first 4 steps, or I can say a creating of a report, can be easily done in Power BI desktop. ठीक है. अब ये जो Power BI desktop है, this is absolutely free. जो मैंने अभी आपको लिंक थोड़ी देर पहले दी है, ये लिंक से आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हो और ये पूरी तरह से फ्री है. लेकिन जो Power BI सर्विसेज है, शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन, मैं यहाँ पे क्विकली हाईलाइट कर रहा हूँ इसे. ये जो स्टेप नंबर 5 है, इफ यू वांट टू गो विद द स्टेप नंबर 5, देन इन दिस केस यू रिक्वायर्ड अ पावर बीआई सर्विसेज. ठीक है. अब यहाँ पे आपको जो है इसके लिए आपको लाइसेंस लेना होगा और इसका आपको लाइसेंस आपको इसके लिए पे करना होगा. ठीक है. बट अगेन वी आर गोइंग टू परफॉर्म दिस ईयर. ठीक है. सो सो एज ऑफ नाउ दिस इज अ वाईटी. ये तो फ्री है, इसके लिए तो कोई अभी आपको चार्ज नहीं है. ठीक है. सो यू कैन डेफिनेटली फोकस हियर एंड ट्राई टू लर्न दिस, एंड इफ यू वांट टू गो मोर इन डिटेल देन आई विल गिव यू सम रोड मैप. ठीक है. बट इवन एज अ मेंशन इन द बिगिनिंग कि अगर आप अभी आप बिल्कुल भी पूरी तरह से नए हो, अगर आप एक्सेल पे काम कर रहे हो, एक्सेल पे रिपोर्ट्स बना रहे हो, तो दिस सेशन विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन ऑर्डर टू क्रिएट अ रिपोर्ट हम कैसे बनाने वाले, समथिंग लाइक दिस. तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे जो फोल्डर दिया है उसमें काफी सारे फाइल्स है, उसमें एक आउटपुट फाइल भी है. तो समथिंग लाइक दिस वी आर गोइंग टू क्रिएट इन अ नेक्स्ट ऑलमोस्ट 90 मिनट्स, 1.5 आवर के अंदर में हम लोग ये क्रिएट करेंगे, जहां पे मैं आपको बताऊंगा डेटा को कनेक्ट कैसे करना है, ये जो पूरी डिजाइन है, ये डिजाइन को कैसे क्रिएट करना है यूजिंग द एआई प्रॉम्प्ट. देन वी आर गोइंग टू क्रिएट सम विजुअलाइजेशन like line chart, column chart, bar chart, tables. These are my cards, these are my slicers, and definitely here कार्ड्स के साथ में यहाँ पे कुछ आइकन्स भी यहाँ पे रखे हुए, राइट. तो ये सब कुछ कैसे करना है, एग्जैक्ट सेम टू सेम हम लोग बनाएंगे अगले 90 मिनट्स के अंदर में इस तरीके की रिपोर्ट. ठीक है. सो सब लोग रेडी, ऑल ऑफ यू? वी हैव अंडरस्टूड अबाउट द डेटा, वी हैव अंडरस्टूड अबाउट the business requirement, and now we are going to start the connection part, and then we are going to start how to start, like create a data modeling and data cleaning. ठीक है, all of you? So I can see very few people have joined, but still गुड. जो लोगों ने ज्वाइन किया है वो लोग जरूर जो है इसको बेनिफिट मिलेगा, और जो लोग नहीं ज्वाइन कर पाए किसी रीजन से, वो लोग रिकॉर्डिंग के जरिए इसको देख सकते हैं. ठीक है. सो दो तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं. एक तो मैं यहाँ पे आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, आप उसको पूरा फोकस करें, ध्यान से देखें. वी हैव अ लिमिटेड टाइम, सो इसमें मैं आपको सारी चीजें स्लोली बताने वाला हूँ. अगर आप मेरे साथ में स्पीड को मैच कर सकते हैं तो यू कैन डेफिनेटली डू अ प्रैक्टिस. आई हैव ऑलरेडी शेयर द डेटा सेट, सॉल्व फाइल, एवरीथिंग आई हैव शेयर्ड विद यू. अगर आप नहीं कर सकते हो इस तरीके से, तो आप जो है सेशन के बाद रिकॉर्डिंग डेफिनेटली अवेलेबल रहेंगी, आप रिकॉर्डिंग को देखते हुए इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं. और अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो आप अपनी जो है कमेंट्स के अंदर में इसके जरूर मेंशन कर सकते हैं. ठीक है. नाउ स्टेप नंबर 1, हम लोग पावर बीआई की प्रैक्टिस फाइल को हमने ओपन किया है, और प्रैक्टिस फाइल में हमें सबसे पहले क्या करना है, इस फाइल को, इस एक्सेल को कनेक्ट करना है. अ क्विक रिकैप अबाउट द पावर बीआई यूजर इंटरफेस. यहाँ पे हमारे पास में होम सेक्शन है, होम टैब, जहाँ रिबिन है, जहाँ पे हमारे पास में होम, इंसर्ट, मॉडलिंग, ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे. बॉटम में आपके पास में है पेज 1, पेज 2, पेज 3. यू कैन क्रिएट अ मल्टी पेज रिपोर्ट. राइट हैंड साइड, वेरी इंपॉर्टेंट, 3 सेक्शंस. वन इज अ डेटा सेक्शंस. यहाँ पे आप अपना जब डेटा कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे सारे टेबल्स आपको दिखाई देंगे. विजुअलाइजेशन पार्ट, देन डेफिनेटली हम लोग यहाँ से यूज करेंगे सारे विजुअलाइजेशन वन बाय वन.
एंड फिल्टरिंग बाय नेम इट सजेस्ट कि आपको डेटा फिल्टर करने का काम करेगा ये, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड you might have 3 option, 4 or 5 depending on the version which you are using. So हमारे लिए यहाँ पे 3 options important है. The option number 1 is a report, जो मैंने यहाँ पे अभी select किया है. This is nothing but my report canvas. तो जो report अभी हम लोग बनाने वाले हैं वो इस section के अंदर में हम लोग बनाने वाले हैं. If you want to see the table, then you need to go to the table view, और table view में आपको ये पूरा यहाँ पे tabular form में आपको data दिखाई देगा, complete data, no preview. It's going to be complete data, and this one is going to be our model where we are going to build a relationship between the multiple tables, between the fact table and the dimension tables, right? And we are going to build a relationship. I'll also explain you why relationship is important. सो फर्स्ट स्टेप नंबर 1 हमें क्या करना है, गेट डेटा. हम अगर हम एक्सेल की बात करते हैं, हमारे एक्सेल के ऊपर हम अभी जो काम कर रहे थे, एक्सेल की फाइल जो मैंने अभी यहाँ पे रखी थी, मैं उसको एक बार ओपन कर लेता हूँ. इसमें हमने मेंशन किया है कि हमारी जो पहली स्टेप है वो क्या है. द स्टेप नंबर 1 इज अ गेट डेटा, राइट, इन अ पावर बीआई. सो मैं यहाँ पे आता हूँ, माई डेटा इज इन अ एक्सेल, माई डेटा इज इन एक्सेल. सो हम लोग यहाँ पे आते हैं, क्लिक करते हैं इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल, ठीक है. ब्राउज द फाइल, आपको ये ब्राउज करना है. तो आप जो है इसे जिप फोल्डर में है तो इसे आप अनजिप कर दीजिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है. और आप जो है इसे वन ड्राइव, गूगल ड्राइव, शेयर पॉइंट पे अगर आपकी फाइल है तो उसे भी आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है. तो जैसे ही हमारी एक्सेल फाइल है जो कि इस वक्त में मेरे डेस्कटॉप पे है, और यहाँ से मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, ट्रैवल टूरिज्म डेटा सेट, आई क्लिक ऑन ओपन. सो जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे, जैसे ही हम इसे कनेक्ट करेंगे, अभी यहाँ पे क्या होगा देखिए आप. सो यू विल गेट अ नेविगेटर विंडो, और इस नेविगेटर विंडो में हमें जो मिल रहा है यहाँ पे, हमें जो मिल रही है यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस, गेस कर सकते हो क्या है ये ऑप्शन सारे. व्हाट आर ऑल दिस ऑप्शंस, कैन यू गेस दिस एवरीवन. क्या ऑप्शन है ये, जो फाइल को हमने कनेक्ट किया है उस फाइल में जो भी हमने डेटा को देखा हमने, राइट. वो जो डेटा था वो कहाँ पर था हमारा डेटा. द डेटा वॉज द डेटा वॉज इन अ एक्सेल शीट्स. तो ये जो डेटा हम यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे क्या हमारे एक्सेल शीट्स है. सो द क्वेश्चन इज, डू आई नीड टू इम्पोर्ट ईच एंड एवरी शीट. आंसर इज डेफिनेटली नो. जो भी आपको जरूरत है आप पहले उसको ले सकते हैं, लेकिन इस वक्त में जो भी हमने रिक्वायरमेंट है इसके हिसाब से हमें सारी फाइल्स, सारी शीट्स चाहिए, एक्सेप्ट दिस डेटा मॉडल इन्फो. तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिम एजेंट पे क्लिक करते हैं. डिम एजेंट पे क्लिक किया तो यहाँ पे डिम एजेंट का प्रीव्यू आ रहा है, और प्रीव्यू के अंदर में हम देख सकते हैं कि क्या डेटा में कुछ प्रॉब्लम है या फिर डेटा क्लीन है, राइट. सो बॉटम में आपको मिलते हैं 3 ऑप्शंस. कैंसल विल कैंसल एवरीथिंग, ट्रांसफॉर्म विल टेक यू टू पावर क्वेरी वेयर यू कैन डू सम डेटा क्लीनिंग. और आपको लगता है कि ये सारे टेबल्स आपके सही है, आपके टेबल्स क्लीन है, देन डायरेक्टली यू कैन क्लिक ऑन अ लोड. सो लोड क्या करेगा, डायरेक्टली आपको जो है पावर बीआई में लेके जाएगा, ठीक है. बट द क्वेश्चन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या ये टेबल क्लीन लग रहा है आपको. डू यू सी एनी प्रॉब्लम विद दिस टेबल, डू यू सी एनी प्रॉब्लम विद दिस टेबल. थोड़ा सा आप जब मैसेज कर रहे हो तो थोड़ा सा डिले हो रहा है, सो इट्स ओके, बट यू कैन डेफिनेटली ट्राई टू आंसर. इज देयर इज एनी प्रॉब्लम विद दिस. डेफिनेटली इसमें प्रॉब्लम है, राइट. एंड द प्रॉब्लम इज, इफ यू क्लोजली लुक यू विल नोटिस हियर कि इसमें जो हेडर्स है वो मिसिंग है, ठीक है. अब हम इसे एक्सेल में सॉल्व नहीं करेंगे, इसे हम लोग पावर बीआई, पावर क्वेरी में जाके सॉल्व करेंगे. बट इसके साथ मुझे बाकी के टेबल्स भी चेक करना है मुझे. एग्जैक्टली, कॉलम हेडर्स. नॉट डिम कस्टमर, डिम कस्टमर क्या है हमारा. डिम कस्टमर लुक्स एब्सोल्युटली फाइन. डिम कस्टमर के अंदर में हमारे पास में कोई चैलेंज नहीं है. तो डिम कस्टमर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एज इट इज लेके जाएंगे इसमें. डिम डेट, ठीक है, गुड, नॉट अ प्रॉब्लम. डिम डेस्टिनेशन, नाउ लुक एट दिस, डू यू सी एनी प्रॉब्लम विद द डिम डेस्टिनेशन. डेस्टिनेशन के अंदर में है कुछ प्रॉब्लम, आप देख सकते हैं यहाँ पे डेस्टिनेशन में प्रॉब्लम है यहाँ पर. नो, ऑल गुड. डेस्टिनेशन, ठीक है. डेस्टिनेशन में भी प्रॉब्लम क्या है हमारा, कॉलम हेडर, ठीक है. अच्छा देखो, हम लोग अभी, मुझे आप लोगों के प्रोफाइल्स के बारे में नहीं पता है, हो सकता है कि कुछ लोग, आप में से कुछ लोग ऑलरेडी पावर बीआई में काम कर रहे हो, या फिर कुछ लोग बिल्कुल नए हो. तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ना हो इसलिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे टेबल के नाम में डिम और फैक्ट लिखा हुआ है, ठीक है. बट इसका एक डेफिनेशन है. डिम टेबल वो टेबल्स होते हैं जो आपके अपडेट तो होते हैं, लेकिन बहुत उसकी फ्रीक्वेंसी जो है ज्यादा नहीं होती, कम होती है उसकी फ्रीक्वेंसी. जैसे मान लीजिए हमारी कंपनी जो है इस वक्त में टूरिज्म कंपनी, हम लोग 15 डेस्टिनेशन पे हम लोग जो हमारी सर्विस को प्रोवाइड करते हैं. नया डेस्टिनेशन यहाँ पे कब आएगा, व्हेन द न्यू डेस्टिनेशन विल कम हियर.
जब हम लोग कुछ नया इंट्रोड्यूस करेंगे, राइट, नया हम लोग जो है लेकर आएंगे, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेंगी, वो हर दिन तो नहीं होंगी, राइट। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ डिम टेबल, राइट, जिसमें हमारा जो डेटा अपडेट होगा वो एक तरह से स्टैटिक है, लेकिन अपडेट होगा, ये 100% स्टैटिक नहीं रहेगा, लेकिन इसकी अपडेट की फ्रीक्वेंसी कम रहेगी। और इसके कंपेयर में जो बुकिंग का टेबल है, जो बुकिंग का टेबल है वो कैसे रहेगा, एग्जैक्टली, रेयरली अनिमेश। सो जो बुकिंग का टेबल है ये कैसे रहने वाला है, बुकिंग के टेबल में क्या प्रॉब्लम, बुकिंग के टेबल की जो फ्रीक्वेंसी रहेंगी अपडेट होने की वो कैसे रहेंगी। एवरी डे आई कैन एक्सपेक्ट सम कस्टमर, राइट, रिपीट कस्टमर भी आ सकते हैं हमारे पास में, और नए कस्टमर्स भी आ सकते हैं, इंक्वायरी के लिए आ सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं, कैंसिल हो सकता है, कंफर्मेशन उनको मैसेज भेजना होता है, राइट। सो दिस इज अ ट्रांजेक्शन टेबल, दिस इज अ ट्रांजेक्शन टेबल विच यू नो लाइक विच इज अपडेटिंग एवरी डे, वी कैन से ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स, एवरी बिजनेस आवर्स के अंदर में ये क्या हो रहा है, आपकी फाइल ये जो आपका जो है अपडेट होता रहेगा, राइट। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, फैक्ट टेबल। और एक और है हमारे पास में डिम पैकेज। अब पैकेज भी हमने जो है डिसाइड किया है कि ये सारे पैकेजेस है, अगेन ये रिवाइज होते हैं चार्जेस, आई एम नॉट सेइंग कि ये चार्जेस हमेशा फिक्स रहेंगे। हो सकता है कि 1 साल या 2 साल के बाद में जो है होटल के प्राइजेस बढ़ गए, टिकट्स के प्राइजेस बढ़ गए, तो आप डेफिनेटली इसको अपडेट करोगे, राइट। बट अगेन इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इतनी ज्यादा नहीं रहेंगी। तो जो टेबल आपके रेगुलर अपडेट नहीं होते हैं, राइट, और जो टेबल आपके नॉट 100% बट क्लोज टू 100% वो स्टैटिक ही है, उसको हम लोग डिम टेबल कहेंगे। और जो हमारा ट्रांजेक्शन टेबल है, जहाँ पे डेट है, नंबर्स है, जहाँ पे आपके कुछ ट्रांजेक्शन वैल्यू है, उन सभी को हम लोग क्या बताएंगे, फैक्ट टेबल बताएंगे, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले क्विक क्वेश्चन मैं आप लोगों को पूछता हूँ, ठीक है, आप लोग उसका आंसर देने की कोशिश करें। मुझे पता है कि थोड़ा सा ये लाइव है, इसमें थोड़ा सा डिले हो रहा है, आप लोग आंसर तो दे रहे हो, लेकिन वो आंसर चैट विंडो में थोड़े टाइम के बाद अपीयर हो रहा है, बट इट्स ओके, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ, कोशिश करें इसको आंसर देने की। जैसे मेरे पास में यहाँ पे कस्टमर आईडी का एक कॉलम है, ठीक है, और मेरे पास में कस्टमर का यहाँ पे एक टेबल है। अब ये जो कस्टमर का टेबल है, इसे मैं कब अपडेट करूंगा, मैं इस कस्टमर के टेबल को मैं अपडेट कब करूंगा, यहाँ पे जो एंट्री है वो कब आएगी इस कस्टमर के टेबल में। यहाँ पे जो एंट्री आएंगी वो कब आएगी, जब हमारे पास में कोई नया कस्टमर आएगा फर्स्ट टाइम, ठीक है। बात समझ में आ रही है, जब फर्स्ट टाइम हमारे पास में कोई नया कस्टमर आएगा तब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे अपडेट करेंगे। अब यही कस्टमर हमारे पास में कुछ आके बुकिंग करता है, हम इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। व्हेन न्यू कस्टमर विल कम, बिल्कुल सही। थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहिए, तो इसमें क्या रहेगा कि आपको भी इसमें मजा आएगा और आप भी इसमें समझ पाओगे कि एक्चुअली में हम लोग कर क्या रहे हैं, राइट। इट शुड नॉट बी अ वन वे। बस यही कि मैं मतलब आप अनम्यूट नहीं कर सकते हो, लेकिन आप डेफिनेटली चैट से मेरे साथ में बात कर सकते हो। अब आप जो है मान लीजिए, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि अभी आप सभी लोग एक्सेल यूजर्स हो, एक्सेल में अभी आप सब लोग काम करते हो। तो ये जो कस्टमर की इन्फॉर्मेशन है, अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे बाकी की इन्फॉर्मेशन उसकी लेना है यहाँ पर, जैसे कि कस्टमर का जो है डिटेलिंग इंफॉर्मेशन में मेरे पास में क्या है, कस्टमर का नाम, सिटी, एज, जेंडर, सेगमेंट, और मान लीजिए उसको ईमेल भेजना है तो ईमेल, फोन नंबर, ये सारी इंफॉर्मेशन अगर मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा, व्हाट आई हैव टू डू in this particular table if I want to get all this information from a customer table। अभी मुझे जरूरत है कि मुझे सिटी वाइज देखना है, कौन से सिटी के ज्यादा कस्टमर्स है, जेंडर वाइज देखना है कि बुकिंग कहाँ पे हो रही है ज्यादा, सेगमेंट वाइज मुझे देखना है कि कौन से सेगमेंट की हो रही है। हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, वी लुकअप और एक्स लुकअप लगाएंगे, बिल्कुल सही। अब वी लुकअप और एक्स लुकअप से क्या होगा, यहाँ पर कितने कॉलम्स है हमारे पास, ये फिलहाल में ये हमारे पास में कॉलम्स है अराउंड 7 कॉलम्स है ये, और नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारे पास, अराउंड 500 रोज है, ठीक है। सो अराउंड 500 रोज है मेरे पास में यहाँ पे, और नंबर ऑफ कॉलम मेरे पास में 7 है। मतलब मैं यहाँ पे कितने फॉर्मूलाज लगेंगे, यहाँ पर हाउ मेनी फॉर्मूलाज आर गोइंग टू बी देयर, हाउ मेनी फॉर्मूलाज आर गोइंग टू बी देयर इन एक्सेल, रॉबिन। दैट्स अ सोल्यूशन, बट अभी हम लोग पहले प्रॉब्लम को समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आपका लगभग 3500 फॉर्मूलाज हो जाएंगे यहाँ पे, राइट। फिर आप क्या करोगे, उसको स्पेशल वैल्यू करोगे और उसको हटा दोगे। आप मुझे बोलोगे यार कौन सी बड़ी बात है यार, मैं तो बड़ा फास्ट हूँ एक्सेल के अंदर में और मैं कर लूंगा, आई एग्री, आप कर भी लोगे। लेकिन क्या ये डायनामिक सोल्यूशन रहेगा, मान लीजिए कोई नया कस्टमर यहाँ पे नई एंट्री होती है, तो क्या ये फॉर्मूला फिर से आ जाएगा, आपने तो फॉर्मूला हटा दिया है अभी, राइट। तो फॉर्मूला तो आपने हटा दिया है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे नहीं रहेगा। सो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या होंगी इससे, इससे प्रॉब्लम ये होंगी कि बार बार आपको फॉर्मूला ड्रैग करना होगा, और एडिशनल कॉलम्स यहाँ पे आ गए आपके पास, जिससे आपका क्या होगा, फाइल का साइज आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। और मतलब मिल जाएगा आपको आंसर, लेकिन ये सोल्यूशन आपका जो है ऑप्टिमाइज सोल्यूशन नहीं है।
ये तो मैंने एक टेबल की बात की। अब ऐसे मेरे पास में डेस्टिनेशन का टेबल है, मेरे पास में पैकेज का टेबल है, और मेरे पास में एजेंट का टेबल है। तो जस्ट इमेजिन करो आप यहाँ पे कितने टेबल्स, कितने कॉलम्स लेके आओगे अगर आपको इसके ऊपर एनालिसिस करना है तो, राइट? सो बात समझ में आ रही है एवरीवन, सभी को, ऑल ऑफ यू? तो एनालिसिस तो एक्सेल में कर लोगे आप। और ये जो प्रॉब्लम है, ये जो स्केलिंग का प्रॉब्लम है, या इसको जो है हम लोग बोलते हैं रिपीटेटिव टास्क जो हम लोग बार बार करते हैं, इसको अगर हमें अवॉइड करना है, या फिर इसको हम इसमें से हमें अगर बाहर निकलना है, तभी हम लोग जो है पावर बीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां पे हम इस टेबल को जो है लोड करेंगे, और इन टेबल्स के बीच में हम लोग क्या करेंगे, रिलेशनशिप को क्रिएट करेंगे। आ रही है बात समझ में? ठीक है, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो डेटा में यहाँ पे डेटा क्लीन ना हो, यहाँ पे मान लीजिए कुछ एक्स्ट्रा की स्पेस हो, यहाँ पे दो कॉलम्स कंबाइन है। तो जो भी आप यहाँ पे डेटा क्लीनिंग की स्टेप्स करते हो, ये सारी डेटा क्लीनिंग की स्टेप्स आप बड़ी आसानी से पावर क्वेरी के अंदर में कर सकते हो, राइट? सो दैट्स वाई ये जो दो टॉपिक है ना हमारे, ये वाले डेटा ट्रांसफॉर्मेशन और डेटा मॉडल, ये बड़े ही पावरफुल है। ये एक में क्या होगा, आपका पूरी तरीके से आप डेटा को क्लीन कर सकते हो, और ये सारी स्टेप्स रिकॉर्ड होती है, जिसका मतलब ये है कि अगर आगे चल के कोई नया डेटा आया तो आप रिफ्रेश करोगे तो आपको आपको आंसर मिल जाएगा। और डेटा मॉडल में क्या होगा, विदाउट लाइक अप्लाइंग वी लुकअप, यू कैन बिल्ड अ कलेक्शन कनेक्शंस बिटवीन द टू टेबल्स एंड गेट द आंसर। ठीक है, आई होप अप टू दिस पॉइंट एवरीवन इज क्लियर। एग्जैक्टली, पावर क्वेरी इज वेरी वेरी नाइस, वेरी पावरफुल व्हेन इट कम्स टू अ डेटा क्लीनिंग। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे इन सब टेबल्स को लिया, और मुझे हमने देखा कि कुछ टेबल्स में प्रॉब्लम है, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करते हैं। और अभी आप देखिए यहाँ पे, पूरा ध्यान से देखिए, ये पूरा इंटरेक्टिव सेशन है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जो चीज हमारे पेड कोर्सेज में होती है, वो चीज मैं आपको यहाँ पे एब्सोल्युटली फ्री में बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर वाकई में आप लर्निंग के लिए ये हो, क्यूरियस हो, पैशनेट हो, तो इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा, तो पूरा फोकस करें। अब देखिए, सबसे पहली बात क्या होगी, जैसे मैंने यहाँ पे टेबल को लोड किया, तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ आपको यहाँ पे वार्निंग मैसेज आ रहा है। सारे टेबल पूरी तरीके से लोड नहीं हुए। ठीक है, ये पावर क्वेरी का ये नोन बिहेवियर है। कई बार आपको ये नहीं मिलेगा, जैसे डेस्टिनेशन में नहीं मिल रहा है, डेस्टिनेशन को उसने प्रॉपर लोड कर दिया, लेकिन यहाँ पे वो लोड नहीं कर पाया क्योंकि शायद से जो है कैशे क्लियर नहीं था, या फिर उसको वक्त लगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, होम टैब में जाते हैं सबसे पहले, यहाँ पे रिफ्रेश प्रीव्यू का एक ऑप्शन है, इसमें जाते हैं रिफ्रेश प्रीव्यू के ड्रॉप डाउन में, एंड वी विल क्लिक ऑन रिफ्रेश ऑल। जैसे हमने रिफ्रेश ऑल को क्लिक किया, यहाँ पर आप देखें ये सारे टेबल्स को भी ये रिफ्रेश कर देगा, यानी हमारे सोर्स के साथ में जो हमने कनेक्ट किया, और देखिए सारे क्वेश्चन मार्क्स आपके यहाँ से चले गए ये। ठीक है, अब पावर क्वेरी का यूजर इंटरफेस क्विकली समझ लेते हैं अगले 2 या 3 मिनट में। सो यहाँ पे आपके पास में टॉप सेक्शन है रिबिन। सबसे पहले ये एक्सेल नहीं है, तो यहाँ पे आप एक्सेल की तरह इसको ट्रीट ना करें कि एक्सेल की तरह हम इसे काम करेंगे। एक्सेल के शॉर्टकट कीज वगैरह यहाँ पे नहीं चलेंगे, ये एडवांस डेटा क्लीनिंग टूल है ये। लेफ्ट साइड में आपको सारे टेबल्स मिलेंगे, यहाँ पर टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3 जो भी आपने लिया है। जिस टेबल को आपने सेलेक्ट किया है उसका आपको यहाँ पे डेटा दिखाई देगा, लेकिन ये प्रीव्यू है, और ये फर्स्ट 1000 रो ही आपको दिखाई देंगी। ठीक है, आप यहाँ पे नीचे लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में इसको वेरीफाई कर सकते हो कि कॉलम प्रोफाइलिंग बेस्ड ऑन 1000 रो। और इस टेबल के ऊपर आप कोई अगर एक्शन परफॉर्म करोगे, तो वो एक्शन आपकी यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएंगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने इसको रीनेम किया, या इसका मैंने ऑर्डर चेंज किया, इसको मैंने रीऑर्डरिंग किया, तो जो भी एक्शन मैं यहाँ पे परफॉर्म करूंगा, वो यहाँ पे एक्शन आपकी क्या होंगी, रिकॉर्ड हो जाएंगी। अब जो अगर मान लीजिए कुछ गलती से मैंने कुछ गलत एक्सीडेंटली मैंने कुछ गलत स्टेप यहाँ पे फॉलो कर दी, तो यहाँ पे कंट्रोल जेड काम नहीं करता है। आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो आप स्टेप को जाके मॉडिफाई करें फॉर्मूला बार से, या फिर सिंपली आप इस स्टेप को डिलीट कर दीजिए, और आप जो है इसको फिर से रिक्रिएट करें। ठीक है एवरीवन, सो फार सो गुड। पावर क्वेरी यूजर इंटरफेस क्लियर हो गया ऑल ऑफ यू? एक आप जरा मुझे क्विक कंफर्मेशन दे दीजिए। ठीक है, ऑल राइट, आई कैन सी नाउ, यू कैन जस्ट सिंपली लाइक गिव अ लाइक रिएक्शन। सो उससे भी मुझे समझ में आ जाएगा कि भाई ठीक है, आपको जो ये चीज़ समझ में आ गई, क्योंकि मैसेजेस थोड़े से डिले हो रहे हैं। तो कोई बात नहीं, अगर आपके मैसेजेस अगर डिले आ रहे, बट आई कैन अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, बढ़िया। सो अब यहाँ पे देखा हमने, वन बाय वन हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। डिम एजेंट है हमारे पास, तो डिम एजेंट के अंदर में क्या है हमारे पास, डिम एजेंट के अंदर में हमारे पास में है हेडर्स आर मिसिंग। सो हम लोग जाते हैं ट्रांसफॉर्म टैब में, और ट्रांसफॉर्म टैब में पहला ऑप्शन है यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर। तो यहाँ पे हमारा हेडर फिक्स हो गया। अब जैसे ही यहाँ पे हेडर फिक्स हुआ, आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पे हेडर, प्रोमोट हेडर का एक यहाँ पे ये आ गया है स्टेप, और यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुका है। ठीक है,
डिम कस्टमर में जाते हैं, लुक्स एवरीथिंग ओके। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ क्विकली, एक और चीज आप वेरीफाई कर लेना, वो ये है कि इसका जो डेटा टाइप है, जैसे एबीसी, इट्स अ टेक्स्ट डेटा टाइप, दिस शुड बी अ टेक्स्ट। और आप यहाँ पे देख सकते हो फोन नंबर पे 123 है, विच इज अगेन करेक्ट, क्योंकि ये हमारा न्यूमेरिकल कॉलम है ये। तो ये चीज को थोड़ा सा आपने क्या करना, वेरीफाई कर लेना। डिम डेट, लुक्स एवरीथिंग ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अभी फिलहाल में मैंने डिम डेट को है ना मैन्युअली बना लिया था एक्सेल के अंदर में, लेकिन आगे चल के अगर हम लोग कोई एडवांस सेशन लेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कैलेंडर और ऑटो का इस्तेमाल करके भी हम इसको पूरे टेबल को डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं। डेस्टिनेशन में जाते हैं हम लोग, यहाँ पे भी कॉलम का प्रॉब्लम है, हेडर का प्रॉब्लम है। सो कॉलम हेडर्स आर मिसिंग। सो हम लोग ट्रांसफॉर्म में जाके क्लिक करेंगे, यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर। हेडर्स यहाँ पे मिस हो गए। कुछ लोग मैं देख पा रहा हूँ नाम यहाँ पे, जो लोगों ने मेरा पहले सेशन अटेंड किया है, और आई थिंक ये सारी चीजें आपको पता है, राइट? सो आपको शायद थोड़ा इजी लग रहा होगा, लेकिन जो लोग पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं मेरा सेशन, तो शायद से आपको ये डिफिकल्ट लगे, बट आप अगर इसको कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपको जो है ये मिलेगा, राइट? English में, all right. I will try to keep both language because few people are from India, and I think few have joined from outside India. All right. So what we have done is we have like fixed the header. How we have fixed the header? By selecting the table. We have I have deleted this step because I want to showcase you again. So I have deleted these two steps. Now select the destination, dim destination table. Go to the transform tab in a ribbon and click on this use first row as a header. The moment you click on this use first row as a header, you will notice a headers has been fixed here. And look at this here, the steps has been recorded. Steps has been recorded here, right? Okay, all right, I'll take care of this. Thank you for informing. Now, fact booking. What is a fact booking? Fact booking looks okay. I don't see any challenge here. As I mentioned, you need to check one more thing. And what is that? You need to make sure the data types are correct. Now, what does this ABC indicates? ABC से क्या समझ में आ रहा है हमें? What does this ABC indicates? This column contain a text data type, right? When you click on this, when you see this icon, calendar icon, it says it's a date column, and I think this one, yes, that's a string, and in 1 to 3 indicates this is my numeric or integer column, right? So ये आपको थोड़ा सा quickly check करना है, because in this case you will see the the right columns are loaded. Okay, dim package, I'll go to the dim package. Looks everything okay with the dim package, right? So we have not performed like so many steps for the data cleaning, as we have a limited time. But definitely whatever we have applied, that was a required. And then we have fixed the problem here, and we have fixed all our tables, right? Clear everyone? So far so good. Everyone, so far so good. So what we have done, we have completed our step number 2. Step number 2 kya tha hamara? What was our step number 2? The step number 2 was data transformation. So we have done with the data transformation. Now it's time to load the data in a Power BI. It's time to load the data in a Power BI. So what we are going to do is, we'll go to the home tab of a Power Query. Go to the home tab of Power Query. Click on close and apply. What you have to do here? You have to click on close and apply. The moment you click on close and apply, see what happens. Don't try to do forcefully anything here. Allow some time, a 30-second or 1 minute. You will see the tables are being loaded. There is some relationship which are being created between these tables, and then you will also see the size of the tables. So wait here for 30 seconds or a minute, and then you will notice everything is performing here, so by automatically. And look at this here, now my tables detected relationship, number of rows are loaded, and this message is now gone. There is no message here. And on my right hand side, I can see all the tables are successfully loaded here. I can expand this, and I can see here the tables are being loaded properly. Clear this everyone? So far so good. So there are some basic things which you need to follow. Don't try to do forcefully anything here. Allow some time, 30 second, 1 minute, and it will get done automatically. Okay. So next step is very important. Next step is, we'll go to the data model. Now in a data model, I can see so many tables here, and some lines are there in between. There are some lines which are missing, but there are some lines which are there. There are two type of lines. One is a solid line, and one is my dotted line. So we have a four type of relationship. We have a four type of relationship between two tables. Now, what exactly meaning by the relationship? So I'll quickly explain you here. Pay attention on the screen here, everyone. So let's say I have a employee ID. Let's say E001.
it's appearing three times, and E002 again appearing three times. Now you want to find out the name here. You want to find out the name of this person, and you have a this master data where you have a E001, E002, and the name is what? Name is, let's say, Ajay and Vijay. Now I want to get this information here. If you are in Excel, what you will do in order to get this in Excel? क्या करोगे आप एक्सेल में? What you will perform? Which formula you will perform to get this answer here? Very simple. क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे एक एक्सेल का बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला विच हेल्प टू कनेक्ट द टू टेबल्स. समवन हैज गिवन दिस आंसर फ्यू मिनट्स बैक एंड इट्स यस एग्जैक्टली इट्स अ वी लुकअप. ठीक है. नाउ इन दिस HR ID, I have a HR ID and I have an employee ID. While applying VLOOKUP, is the headers are important? Headers are important. Headers are not important. The values are important. How the values are appearing here? The values are appearing here as a unique. How the values are appearing here? The values are appearing here as a duplicate. Now this word duplicate and unique is a Excel word, but in Power BI, we have a word as a one, and this one is a many. So the when we are going to build a relationship between these two tables, it's going to create as a one to many relationship, right? It's going to create a one to many relationship. So we have a four type of relationship. We have a four type of relationship. One is a first is a one to many. Very nice. Few people have given this answer. Second is a many to one. Third one is one to one, and fourth one is many to many. So we have a four type of relationship. Now you are going to ask me the question here, how I will come to know which relationship I have to apply? So you don't have to. It will automatically detect by the Power BI only. ठीक है. यहाँ पे क्या रहेगा? Power BI आपको ये खुद से detect कर लेगा. But you have to select the right column. When you are building a relationship, you have to select the right column, drag and drop. ठीक है. So now based on this, what we are going to do is we are going to fix our data model. Now, in a data model, as of now, I can see some correct relationship, some incorrect, right? So this is creating a confusing for me. So what I will do simply, first of all, I'll delete all the relationship. So right click on this dotted line, delete. Right click on this dotted solid line, delete. Again, delete this one, and again delete this one. Look at this here. You can do this one by one, or you can go to the manage relationship in a home tab, and you can select multiple here, and you can simply delete this as well. So if you want to delete all the relationship in one go, simply go to the home tab, click on manage relationship, and in a manage relationship you will see all the relationship here. Just select and delete. Why we are deleting this? So we are going to create a like a correct relationship between all the tables. All right. Now look at this here. Now all the tables are clean enough, so there is no connection between all these tables. And then we have to first of all arrange the table properly. So remember, fact table, all the dim table will connect to your fact table, right? All the dim table. Yes, solid line is good, but sometimes what happens if the dim table is connected with dim table, then this is not correct. We need to correct dim with the fact table, right? So solid arc, okay, that's absolutely fine. But यहाँ पे हमें क्या करना है, Animesh? We have to make sure like all these dim are connected with the fact table. So if you notice this customer ID, or I think this agent ID, something was connected here, something was connected here, right? Which was not correct, right? Now keep the fact table in a center, and let's start the building relationship one by one. All right. So यहाँ पे हम देख रहे हैं कि we have a five table. थोड़ा हम इसको zoom out करते हैं little bit from the right bottom corner. You can reduce the size, and you will notice like all the tables are appearing properly. And now one by one, we'll have to check what is the common between dim customer and fact booking. So what is a common factor here? So I can see there is a customer ID, and there's a customer ID here, right? So simple right click, select this, drag and drop. आपको क्या करना है यहाँ पे? सिंपल इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है. यू विल सी हियर न्यू रिलेशनशिप फ्रॉम डिम कस्टमर to fact booking based on this common column. This is detected as a one to many as a auto detection because of the unique and the duplicate value. Cross filter, keep it as a single, and click on save. The moment you click on save, the relationship is created here, right? Now, in the same way, what we will do, we will create the other relationship as well. So, dim agent and fact booking.
Again, common factor is agent ID with agent ID. Safe. All right. Dim package with fact booking. Common factor, destination with destination. So you can drag from dim package to fact or from this point to this point. Both are good. I think I have selected. Okay, destination ID. It says many to many, which is incorrect. So let me like delete this. So let me keep this here. Let me first select this destination ID. This destination ID with destination ID. Okay, this is good. Now we have a extended version of a destination ID. So थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इसको यहाँ पर. What is there in a destination table? So we have a unique value here, destination ID. In dim package, we have again as a unique value. All right, यहाँ पे भी तो unique value है. All right, look at this here. We got a duplicate value, and that's why we got some error there. So destination is same, but there are two different packages. So let's see what else is there. So in this dim package and fact booking, do you see any common column? Destination is not working because they are showing as a multiple. So what we have, do we have a package ID here? No, we don't have a package ID. यहाँ पे देखते हैं हम लोग. We don't have any package ID. Package ID है. All right. Yes, yes. We have a package ID and package ID. So we can go ahead and we can connect like this here. So I think this should work. हाँ, that's correct. Very nice answer. This one. तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे fact booking and this package ID in both the tables. This one is same. So save here. यहाँ पे आपका ये बन गया, राइट. एंड देन फाइनली क्रिएट अ डिम कनेक्शन विद अ डिम. सो डिम के साथ हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, बुकिंग डेट विद डेट, राइट. सो हमने यहाँ पे बना दिया इसको ये. सो फॉर सो गुड एवरीवन. This relationship is clear. How we have created, considering like a common factor between the two tables. Quickly give me a like reaction so I can understand if it is going good or not. If there is anything you want me to repeat, just mention in a chat window and I'll be happy to repeat that. Okay. All right. All right. Now I can see some reactions are coming. So good, good. It's good to know it's going good and you are able to understand this. Okay. Let me read out some comments. कुछ messages है क्या इसमें देख लेते हैं हम लोग. Sir, is it necessary to have a one-to-many relationship? As I mentioned, it's not something like we are deciding it. It's depend on our data. So when you build a relationship, it's mostly one-to-many. So your dim table always contain a unique value. जैसे हमने देखा था customer, you will have a customer entry here only one time, but that customer will come multiple time to book your services, right. समझ में आ रही है everyone. So यहाँ पे तो ये हमेशा यूनिक ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे वो रिपीट हो सकता है. So when you create a relationship, you will definitely see as a one to many here, right. So it's not something like we are creating it. It's about the modern database structure है ये हमारा, ठीक है. And this type of relationship or schema is called as a star schema. Now, in this star schema, you will have a fact table in a center which is connected with your dim tables, right? आप इसको immediately मतलब आप इसको Google करके देख सकते हैं. You will see a image of a star schema where you will have a fact table in a center, and based on the common column, it is connected with your dimension table. Clear all of you? The star schema. Okay. So we have like around 30 minutes, and in a 30 minutes we have completed these two things. In the next 30 minutes, I'm going to show you how we are going to build design using the AI prompt, right? So यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक डिजाइनिंग बनानी है मुझे यहाँ पे. तो यहाँ पे इसके लिए मैंने आपको एक फोल्डर दिया है. in this folder there is a design prompt. इस prompt के लिए इस prompt को आप यूज कर सकते हैं. You can use this prompt and you can put this prompt in any of the AI, and then you can say a 4 slide design dashboard banana with a presentation with a modern trending look. You can definitely change the color palette if you want. If you have some brand color, you can use a color palette here. Slide 1, what you want to cover. Slide 2, what you want to cover, and so on, right. So in this case, you're going to get some wireframe. You're going to get some like in the form of svg, or in the form of png, or in the form of ppt. So whatever you want, you can just put the output how you want to see the output. So what I did, I have like already run this prompt, and then I am able to like see these 4 images. ये जो 4 images है, ये 4 images हमने prompt के जरिए बनाई हैं, right. So we have generated using this AI prompt. So this is going to be my first page,
My second page where I will put the KPI cards, line chart, bar chart, remaining charts here, and then definitely I will put the slicer here. So I'm going to show you one page executive summary, but as a practice, you can definitely do agent and package performance in a second slide, using this third slide, sorry, and then fourth slide is for customer insights. So try to do practice on the third and fourth slide, but I'm going to show you the first and second one. The first and second one मैं आपको बताऊंगा. So this is something like we will add in our Power BI as a canvas, and second we are going to add this as a like a fixed layout, and in this fixed layout we are going to add the information from our tables. So clear this, everyone, all of you. Is this clear? How you can create this? You don't have to do a hard work nowadays because of AI. You can definitely do a lot of you can automate, or you can like ease your work using the AI correctly. Okay, so you can definitely go ahead and do this. So let's start with creating our first slide as a summary, or we can say the index. इंडेक्स ले लेता हूँ. यहाँ पे शीट का नाम हम लोग दे देंगे इंडेक्स शीट. जो भी नाम आपको देना है वो नाम दे सकते हैं आप. एंड नाउ गो टू द विजुअलाइजेशन. इट्स अ ब्लैंक एज ऑफ नाउ. Go to the visualization, go to the format, go to the format page, and then go to the canvas background. All right. So in a canvas background, you will notice the image option, browse option. So I'm going to browse this image. So which image I'm going to browse? I'm going to browse the slide design 001. All right, I browse this, but I don't see any impact here because of this transparency. So I'm going to reduce the transparency to 0%, and image fit, I'll make it as a stretch. And look at this here. Your first slide is ready. Your first slide is ready here, the index sheet, where you can definitely change all these things, like it's a live session. So I put everything related to the live session. Now you can see this build visual part यहाँ पे जो दिख रहा है ना, how we can remove this. So what we'll do is we can simply go to insert and create a text box. और ये text box की size को मैं क्या कर देता हूँ, I'll reduce the text box size. I don't want to showcase a text box here, but because of there is no visual on this, there was option appearing as a show add a visuals, right? So हमने यहाँ पे क्या किया? Quickly recap. I'll do a quick recap, no problem. So I clicked on a format page. I selected a canvas background. In a canvas background, I like imported the image 01, which is already there with you in a slide design folder. I selected stretch. It may be stretch or it may be fit, full fit for you depending on the version. So आप यहाँ पे इसको stretch करके देखिए या तो उसको fill करके देखिए क्या best fit है. And then most important, transparency. Transparency को क्या करना है आपको? Make it 0%. Clear, everyone, all of you? Yes or no? The first slide is clear. So we are able to successfully create our first part. Don't forget to save the file. So जैसे मैंने यहाँ पे सेव कर दिया फाइल को, ठीक है. Just give me a quick like reaction, all of you. So I'll have understanding how it is going with. Okay. All right. Now I can see some reactions. All right. ठीक है. So अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. All of you pay attention on the screen. I am moving to the second part. Here you go. थोड़ा सा late आ रहा है. It's slightly late, but it's okay. Uh, the person who has requested to explain this in English, are you still there? You're able to understand things now? So 5871 ID, are you able to understand these things? So relationship, we have learned with the relationship. We are done with the Power Query data transformation. Okay, hope so. You are there because आपका कोई response नहीं मिल रहा है मुझे. So we'll definitely continue with the English plus Hindi language. All right. Now let's create a second page. Second page का नाम हम लोग देते हैं यहाँ पर. The name I'll give here as a maybe executive summary. So summary page हमने दिया इसका नाम, and then I'm going to do the same thing. So pay attention on the screen. Go to the build visual, go to the canvas background, go to the browse option, and then select this 002 slide. Press OK. No impact, no impact as output. So I'll select stretch. Still I don't see anything here. Transparency should be 0%. And look at this. My first, like the layout is ready. The wireframe, we can say, the structure is ready, and now it just
the matter of adding the visuals and adding the information there. Okay, everyone. So far, so good. Tell me quickly, everyone. Meanwhile, I'll just take a 30-second pause and we'll see if there is any questions or anything you want me to repeat. All right. All good, na? You're there, na? All right. Okay. Good. Good. Good to see the response. All right. Now, in Power BI, we have a many visualizations part, right? Many visuals. We call it as a visuals. Usually in Excel, we call it as a charts. यहाँ पे आप chart बोल सकते हैं, no problem. But usually it's a visual, like it's a build visual, format visual. You will see this word more. Now, in the top layer, I want to showcase KPI cards. Now, KPI card में मुझे क्या बताना है? Total revenue. I want to showcase average revenue. I want to showcase total customers, happy customers, and maybe average rating. एंड और क्या था हमारे इसमें, हमने शायद से उसका स्क्रीनशॉट देखा था, स्क्रीनशॉट में देख लेते हम लोग. सो टोटल बुकिंग्स, सो टोटल रेवेन्यू, टोटल बुकिंग्स, एवरेज रेवेन्यू, happy customer, and an average rating. So I want to showcase all these five information in my first layer. So how I'm going to do this? Pay attention on the screen, everyone. So I'll simply click on this 1, 2, 3 card. Look at this. In the build visual section, I have many visuals and I'm going to click on this 1, 2, 3 card. जैसे ही मैं 1, 2, 3 card पे click करता हूँ, I'll notice a one, like a blank structure of card is appearing, which I can definitely change the size, and I will try to put this into the first block. This one. All right. Now, after selecting this, I can see there's a build visual because I've selected this. If I'm not selecting this, then you will see here as a format page and no option is available here, right? So make sure you select the visual correctly. The correct visual is selected where you want to make some addition. So select this. Now you will see the value, what value you want to add in this. So I want to add as a total revenue. So revenue is available in a fact booking table. I'll go to the fact booking table and then I'm going to click on this revenue and drag and drop. Look at this here. Simple drag and drop into value. You can directly drag and drop into this card as well. No problem, right? Both options will work. Both options will work. So I'll do directly right click. I'll do, so not right click. I'll do drag and drop here as well, or I can do drag and drop here as well. So look at this now here. It says me you have around 89 million as a total revenue. Okay. Now this 89 million, it's correct. I want to add some formatting here. Like it's not a sum of. Sum of is not looking very good, not readable. So I just want to keep as a total revenue. So what I will do, I will again select this card. Then I have this build visual, and in a value section, I'll see here is a sum of total revenue. So I'll double click on this and just remove this sum of and hit enter, and you have a just total revenue here. So look at this here. The very first, like card is showing as a total revenue. And let's say now you want to add a rupee symbol here or some currency symbol. Then select the total revenue again from your data section. Select this. You will notice a column tool is appearing in the ribbon, and then in a column tool you have to select this currency format. So you can definitely go here and you can select English United States or English India, whatever you want to select. You can select currency. So I want to go with the English India, so I'll definitely scroll down a little bit, and then I can see here English Finland, English Hong Kong, Ireland. Look at this, English India. The moment I click on English India, I'll get the rupee symbol here. Okay, so rupee symbol यहाँ पे आ गया है based on this. So this step is clear, everyone. How to get the value in a card, and how to add the currency symbol. Is this clear, all of you? Just give me a quick reaction, a like reaction, so I'll come to know, okay, this is going good. और अगर इसमें कुछ चैलेंज है, कोई चीज समझ में नहीं आई है, let me know. I'll be happy to repeat. Okay, it's correct, going good. All right, चलिए बढ़िया, बहुत अच्छे. All right, now I'll copy this card. I'll copy this card, control C, control V, and then simply I want here what, total booking. So revenue को हम यहाँ से हटा देंगे. We'll remove this revenue, and then I want a total booking. So I will move the booking ID from a fact booking table. It says me BK001. Now why it is showing me BK001 and not a count? Because booking ID is a text column. Now how I come to know this is a text column? मुझे कैसे पता चला ये text है? There are so many columns here, right? So look at the icon.
If you see the summation icon, then these are the numeric columns. If you don't see any icon here, that means these are the text column. That is a string column. Clear this, everyone? Now, because of this text, it is not giving me any default count or sum. It is giving me the first text value. But I don't want this first text value. I want a total count. So how I am going to get a total count? Select this card, go to this value section. There is a small drop down. Click on this small drop down and look at this here. It says by default it's a first. I want a count here. So click on count. I have a 500 bookings. And instead of this booking, count of booking, I can rename this as a total booking. Look at this here. So मैंने क्या किया यहाँ पे सिंपल डबल क्लिक किया इसके ऊपर एंड आई हैव रीनेम दिस एज अ टोटल बुकिंग्स. ठीक है, थोड़ा सा इसको हम लोग फिट करने की कोशिश करेंगे एंड लुक एट दिस हियर. इट्स वर्क्स, इट लुक्स गुड. थोड़ा सा यहाँ पे कट हो रहा है ये वाला पार्ट बिकॉज यू नो लाइक ऑफ द वी डोंट हैव दिस फ्री स्पेस हियर, but it's okay, we can keep this like this. Okay, everyone? So bookings are 500. Now again, control, maybe I can copy revenue and I can move the revenue here. Abhi, I have already sum of revenue, but I don't want to showcase sum of revenue again. I want to showcase as the average. So I have copied this. I simply did the control C of this card and control V. Now once I select this second card, I'll see here as a total revenue. Now in this total revenue, again there is a small drop down. In a small drop down, यहाँ पे मैं क्या करूँगा इसको? I'll click on average. I have an average revenue, but heading is incorrect. Heading is incorrect, so I'll definitely go ahead and instead of total, I'll put here as a एवरेज रेवेन्यू. अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक कंसिस्टेंसी भी फॉलो कर लेता हूँ. यहाँ पे मैं थोड़ा स्पेस दे देता हूँ इसमें टोटल के बाद, बिकॉज यहाँ पे मैंने टोटल बुकिंग में भी स्पेस दिया है, एवरेज रेवेन्यू में भी स्पेस हो गया है. ओके, कंट्रोल एस. सो फॉर सो गुड एवरीवन, टेल मी, यहाँ तक बात समझ में आई? वी आर जस्ट 45 minutes and we are like about to like build our dashboard in the next few more minutes, right? और आप देख रहे हो कितना इजी है ये कंपेयर टू एक्सेल. व्हाट डू यू से? Compared to Excel, it's very easy to build this relationship, to build this, like a data cleaning part, and that to complete automated part, right? यहाँ पे हम देखोगे तो यहाँ पे पूरी तरीके से कैसा ये आपका पूरा ऑटोमेशन वाला पार्ट है. ओके, सो डू नॉट लीव द सेशन. सो मेनी इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स आई एम शेयरिंग विथ ऑल ऑफ यू. You, as I mentioned in the beginning, you are, if you really want to learn, then be there till the last minute. So see, there are so many videos available on this topic, right? But very rare you will find a live interaction wala part. So be there, right? Yes sir, pivot table and dashboard, but again it's not going to be that easy, right? जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इतना आसानी से मैं नहीं बना सकता हूँ. It becomes very difficult there, right? So इसको थोड़ा सा मैं ये करना है. अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, now I'm going to show you interesting part. Control C, Control V. I want to see a total customers here. All right. So how many customers I have? I'll go to the dim customer, and I have a customer ID. I'll do the same technique. So customer ID ko I'll move into the value. It says again customer ID. Why? Because customer ID is a text column. So I'll go to this small drop down and click on count. So it's a 100 customer. Now instead of this customer ID, count of customer ID, what I'm going to do is I'm going to change it here as a happy customers. I just change the name as a happy customers. Now happy customers, I also want to add some icon here or some image like happy customers ka. So for this I've given you a folder where there are some icons और इसमें से हमारे पास में कुछ icons है जैसे happy customer, booking. You want to add, you can use everything, but I'm going to show you two and rest you can definitely do a practice. So happy customers and star को मैं बता दूंगा आपको. So how we can do this? So I'll copy this path and then maybe I will go to, I'll select this card. I'll go to the format visual. But before I go to the format visual, I'll need to make sure I selected the right card. And then I will go to the call out. Inside the call out, it is asking me, okay, which value you want to format or which section you want to format. I'll say happy customers. Then I'll go to the label image. Image is off, make it on. Expand the image and inside the image you have option of called as a browse. तो यहाँ पे हम इसको browse करते हैं and I will give this like path happy customers. I'll click on open and it's a very big size. So मैं यहाँ पे क्या करता हूँ इसका size थोड़ा सा कम करके देखते हैं हम लोग. So I'll put the size here as a maybe 50. Okay, I can see now very easily. I can see the 50, but यहाँ पे happy customers का नाम चला गया है. So I'll make it further like a smaller size. So I can definitely type here maybe 25. 25 में भी नहीं आ रहा है ये और
इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, दिस लुक्स बेटर नाउ, बट ये थोड़ा सा बाहर चला जा रहा है ये। आई नीड टू मेक श्योर दिस इज प्रॉपरली फिट। एंड अगर यहाँ पे कुछ थोड़ी सी भी आपको ऐसा लग रहा है कि यार नो यार इट्स नॉट गेटिंग प्रॉपर फिट हियर, और सम प्रॉब्लम इज देयर, देन डेफिनेटली आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यू कैन डू अ फॉर्मेटिंग और यू कैन चेंज योर डिजाइनिंग पार्ट। सो कार्ड में जाके मैं क्या करता हूँ, आई रिड्यूस द साइज ऑफ मे बी वैल्यू, नॉट इन कार्ड सॉरी, कॉल आउट। आई गो टू द कॉल आउट वैल्यू, और वैल्यू को मैं थोड़ा सा कम करने की कोशिश करता हूँ। नो, वैल्यू से तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। मे बी लेबल, लेबल का साइज 12 है, मे बी आई कैन मेक इट 10। ओके, बेटर नाउ, आई एम एबल टू सी दिस वन। सो आई गो टू द लेबल एंड देन लेबल को जाके मैं उसको यहाँ पे कर सकता हूँ, राइट, एंड आई कैन सी नाउ प्रॉपरली हियर। सो लुक एट दिस, दिस इज द बेस्ट फिट नाउ। 100 हैप्पी कस्टमर्स एवरीवन। थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करना रहेगा आपको, थोड़ा सा आपको प्लस माइनस करना रहेगा, बट यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट हियर। ओके, all right, now let's do a copy of this only, and then instead of this happy customer I want to showcase a average rating. So क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, सबसे पहले मैं इमेज को चेंज कर लेता हूँ। लेट्स डू सम स्मार्ट वर्क, क्या देखते हैं यहाँ पे इमेज चेंज करने पे काम बनेगा या नहीं। सो इसको हम लोग हटा देते हैं यहाँ से, हैप्पी कस्टमर ब्राउज हटा देते हैं, एंड आई विल गो टू द स्टार। So this is good. Look at this. This is working. Now I don't have to do the same formatting again and again, because I have done the formatting here and I just copied here and I got the correct answer. Now instead of this happy customer, I want an average rating. So average rating कहाँ पर है? I think it's in a fact booking. यहाँ पे हम लोग average rating को move करते हैं और happy customer को हटा देते हैं। Okay, see, some गड़बड़, कुछ गड़बड़ हो गई है, वहां से हमारा ये चला गया है, but कोई बात नहीं। We'll first do the average rating and then we'll have to do again this. So थोड़ा सा चैलेंज आ गया यहाँ पे। इनसाइड दिस एवरेज रेटिंग हमने इमेज को तो ऐड किया था, बट जैसे ही हमने वैल्यू को बदला इमेज चला गया वहां से। तो कोई बात नहीं, इसको फिर से एक बार हम लोग ब्राउज कर लेते हैं, एंड आई थिंक शुड वर्क विथ 25 पिक्सल, एंड हियर यू गो। एंड अगेन आप क्या करें, कॉल आउट वैल्यू में जाए और लेबल में जाए सॉरी, और उसकी जो साइज थोड़ी सी कम कर देंगे, एवरेज रेटिंग। ठीक है, ऑल राइट, गुड एवरीवन, ऑल ऑफ यू, सो फार सो गुड। Look at this, how easily we have created this. Now again, as I mentioned, it's a, we have a limited time and I have to show you many things. So मैंने इसके लिए जो है आपको limited चीजें, limited time में ज्यादा चीजें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। But again, if you have any question, you have any doubt, you can feel free to mention in a comment and I'll be happy to, you know, like reply on that. Okay, all of you, just give me a quick confirmation, so I'll have a, you know, like understanding how it is going. ठीक है ना, ऑल ऑफ यू, ठीक है, बढ़िया। नाउ क्विकली आई विल ऐड हियर वन लाइन चार्ट, one bar chart, then we have a pie chart table and we have a two pie charts। ठीक है, अभी मुझे 5 चीजें आपको बतानी है। सो ध्यान से देखें, यहाँ पे अगले 10 से 15 मिनट में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सो जस्ट पे अटेंशन ऑन माय स्क्रीन, डू नॉट लीव द सेशन। सो वेरी फर्स्ट थिंग आई विल क्लिक ऑन अ लाइन चार्ट। लाइन चार्ट को हमने क्लिक किया यहाँ पे, ये हमारा लाइन चार्ट यहाँ तक आ गया, हमने इसको यहाँ पे फिट किया। We want, the moment I select the line chart, I can see the x-axis and y-axis information. So why to use a line chart in which scenario, why we are using line chart, in which scenario we required a line chart? Everyone try to answer this. So line chart हम लोग किस सिनारियो में यूज करते हैं? Anyone? I'm waiting for few seconds. Trend timeline, very nice. It's a Anish, it's a Robin, very nice, good answer everyone, both of you. So यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? We have the revenue over the period of time. So revenue we will move in a y-axis, and in a x-axis I will move from a dim date. I will move the month name. But now see what happens here. क्या प्रॉब्लम हुई है यहाँ पे? What is the problem here? What is the problem do you see? I was expecting Jan as a first month, but यहाँ पे क्या हो गया? July, June ऐसे आ रही है. So there's a 3 dots on the top of this chart, and there's an option called as a sort axis. I'll say, hey, look at this. Sort the axis by month name. Sort the axis by month name. I got again September as a first. I'll again try to sort the axis by ascending, but I'm getting April as a first. So problem is what? Why it is giving me April as a first when I'm doing sorting? सॉर्टिंग यहाँ से कर सकते हैं हम लोग, 3 डॉट्स पे जाके देर इज ऑप्शन कॉल एज अ सॉर्ट बाय मंथ नेम एंड सॉर्ट बाय असेंडिंग। ओके, सो अल्फाबेटिकली, वेरी नाइस, सो इट्स अल्फाबेटिकली राइट। सो इसका एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ, लुक एट दिस, यार वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक,
हार्डली यू विल फाइंड दिस. सो मैं आपको बता रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिए आप लोग. हम लोग आते हैं डिम डेट पे. इन अ डिम डेट आई हैव दिस मंथ नेम. अल्फाबेटिकली अप्रैल इज कमिंग फर्स्ट, but I want to sort this. I want to sort this based on a month number. A number wise, what will come first? The numeric 1 will come first. And respective line of a 1 is January. So by default, January will come on a top. So how to do this sorting of a one column based on another column? Pay attention on the screen. So select the dim date table, select the month column. You will notice a month column tool is appearing here. Then go to this sort by. यहाँ पे आपको जाना है sort by, and then you have to click here. Let's say month something like this. हमने month को select किया, but आप बोलोगे यार there is no impact here. It looks same similar. So look at this here. I'll go to the report view, and now look at this here. I got a right answer here. I got a Jan, Feb, March, April. Everything is correct here. Okay. Quickly, I will show you how to add a marker, how to make it as a soft line, and if you want, you can change the color as well. Okay. So I'll go to the formatting. I have a shade area. You can add a shade area if you want. If you want, you can add a marker. So markers are also there. उसको ऑन कर देते हम लोग. I like one option, this one. Lines में मैं जाता हूँ. Where I am, first of all, I am in a chart formatting, visual formatting. So I selected this chart. I selected the format visual. Inside this format visual, I have a multiple option like X, Y, secondary, grid lines, zoom, lines. So inside the line, I have a line style as a solid, round, 3 pixel, which is okay. But interpolation type, this one. I don't know like whether you like or not, but it's my favorite option. I select this as a smooth. Look at this now. A very nice smooth curve will come here. It's up to individual choice. If you like the sharpness, then definitely you can go and you can change this to normal linear. So it will be a something like this, a very sharp corners. But if you want, you can try this smooth as well. All right. Clear everyone, all of you? Look at this, how easily I have created this very nicely a line chart showing the sales for all month. But this is for which year? This is for which year? Tea break. All right. So, do you want a tea break? I really appreciate like you are still there on a call, and आप definitely चाहते हो एक 5 मिनट का break मैं भी लेना चाहूँगा, right? So एक break ले ले हम लोग यहाँ पे 5 minutes, all of you. Good to go for a 5 minute break. ऑल राइट, ठीक है, चलिए हम लोग ले लेते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे. बट आई विल नॉट एबल टू पॉज दिस बिकॉज इट्स अ लाइव गोइंग ऑन. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, 5 मिनट के लिए यहाँ पे हम लोग ब्रेक ले लेते हैं. ठीक है. All right. So try to be on time, everyone. Exact in a 5 minutes, I'm going to restart it. Okay. So what I'll do is quickly, which I usually do in my actual classes, I'll start a timer. एंड टाइमर यहाँ पे मैं अगले 5 मिनट के लिए मैं ऑन कर देता हूँ. वी हैव अ लिमिटेड टाइम, सो ट्राई टू बी ऑन टाइम बिकॉज आई डोंट वांट यू टू मिस एनीथिंग. सो जस्ट बी ऑन टाइम इन अ 5 minute everyone. So quickly everyone be on time.
bad. Sorry. Now, am I audible? So once again, welcome back everyone. And now we are going to complete this remaining visuals in the next 20 minutes, 15 to 20 minutes. Am I audible? Can you give me a confirmation? Yes? All right, good. Thanks, Robin. Okay, so the question was this Jan is for which year? This Feb is for which year? There is no clarity here, right? There is no clarity because we don't know how many years of data we have, right? So in this case, I definitely need a slicer. I need a filtering part here where my user can select any of the year which they want to see, and then this entire dashboard or report will change according to the selected year. So for this we are going to I for this we are going to create a slicer. तो slicer हम लोग कौन सा लेंगे यहाँ पर? We are going to create this button slicer or maybe we can go with the list slicer. List slicer better रहेगा. So I think I can or drop down maybe. So I can go to this slicer option. जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, I got this slicer structure, blank structure, and here I'm going to move year from a dim date. I'm going to move year into this field section and look at this now. If I move the year into field section, I can see the year is appearing like this. So there are 2 years, 23 and 24. I don't want to showcase like this as a slider bar. So I'll select the slicer, then I will go to the format visual, and there I have a slicer setting. Now in a slicer setting, the option is between. I don't want this between. I can go for the vertical list. If you have some space, you can go for this. But we have a horizontal area. So instead of this, I can try maybe drop down. So drop down is okay. और if you want, you can try maybe tile. So tile में क्या होगा, ऐसे दो चीजें मिलेंगी आपको, दो buttons you can create. अगर अपने पास स्पेस है तो हम उसमें डाल सकते हैं, बट आई थिंक वी डोंट हैव दिस मच स्पेस. हाँ, स्पेस है तो हम कुछ ऐसे इसमें ऐड कर सकते हैं. लुक एट दिस, दिस इज गुड फिट. तो यहाँ पे अभी हमने क्या किया, 23 को सिलेक्ट करते हो आप. सो यू विल सी द डेटा फॉर 23 एंड लुक एट दिस ईयर फॉर 2023 देयर वाज अ 272 bookings. 24 you select, there's a 228 bookings, there is a revenue this much. 24 was very slow in the beginning and then we started like moving up. So आप इस तरीके से यहाँ पे slicer बना सकते हैं, and then this slicer will give you an quick idea how you are performing. So let's say if I select 24, if I select 24, I still want to see how my 23 is going on. So do it again, ठीक है. So what I did is अभिषेक, हमने क्या किया यहाँ पे, ये जो स्लाइसर है ना हमारा, ये वाला पार्ट, दिस स्लाइसर, वी सिलेक्टेड दिस स्लाइसर फ्रॉम अ बिल्ड विजुअल, and then in this slicer I simply move year column. Year column I move from a dim date, from this dim date I move this here, and then I can go ahead and I can change this according to the space available. So we have this space available here, so we can definitely go to the formatting. There are multiple ways to showcase the slicer. One is this by default, which is between. आप ऐसे यूज कर सकते हो इसको, but this is very like not very user friendly option, between option. So you can go with a vertical list. आप यहाँ पे वर्टिकल लिस्ट ले सकते हो. You can go for the tile. So in a tile, what happens, you can have this type of buttons. So you can reduce the size and you can definitely have the buttons like this. If you want, you can have a drop down. If you don't have space, then definitely you can create a drop down as well. So यहाँ पे user आके अपना क्या करता है, selection कर लेगा, and so on. Clear now everyone? Yes, it's a recording. Now it's a YouTube record live, so you will definitely get this recording on a YouTube, right, on our channel at dataskillup.com. Okay, so you can definitely go this one. Yes, definitely. See, it's absolutely fine. I completely understand. So, learning, if you are a first time user, it will take time for you to understand and you have to follow all these things. And that's the reason, like I have given you the complete data files, solved files, right? And the recording as well. So, you can definitely do a recap of, by yourself, and then you can do the practice. And अगर उसमें कुछ question आता है, तो you can definitely comment there. Clear ना? This one, Abhishek? All right. Okay. Now, a slightly complex part I'm going to show you. All right. So, I want to showcase um, previous year here, right? और previous year हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, we have to create a DAX.
So I'll create a new measure. I'll create a new measure here. And in a new measure, I'm going to write a formula, conditional formula. So what I want to showcase here, when my user select 2024, want to showcase a 2024 line. But at the same time, I also want to showcase a 23 line. So I want to showcase both in this one, right? So there are two ways. Either you can create a DAX, or what you can do is look at this very fast and easiest way. You have this build visual, you have a x-axis month name, you have a y-axis sum of total revenue, which you can definitely double click and rename this. And very important part, there is a legend option. Now in this legend, you can try to move this year. Year को move कर दीजिए आप. And look at this now. The moment you move year into this legend, then you will see there are both lines. 23 light blue, 24 dark blue. And you can now compare how the performance is over the period of time. ठीक है? Is this clear, everyone, all of you? How to get this two lines here? I want to showcase for both years, so I can just put the legend here. So the moment I move the legend, the moment I move the year into legend, I got this clear view. ठीक है? Now remaining four things, one, two, three, four. Quickly pay attention on the screen. I know like we have a limited time, but it's okay. If there is anything remaining, I'll definitely arrange some another session. But I'm sure like by the time in the next 40 minutes we'll able to complete this. So we have a session for 2 hours, and we definitely विल कीप दिस टाइप ऑफ सेशंस ऑलमोस्ट एवरी वीक. सो जो भी अपने आप लोग सेशन को मिस कर रहे हैं या फिर आप नहीं अटेंड कर पाए, सो यू कैन डेफिनेटली अटेंड दिस लाइव सेशन. In this live session, what is the benefit? You can ask me the question and you can do the practice as well. And you can comment in the last, you can also comment which topic you want me to cover in the next live session. Okay. So that will definitely help me based on your requirement. I can plan. Okay. Now here I want to showcase according to our that output which we have created. I'll just use this as a sample. And here we can see here I want to showcase total revenue by destination. So destination यहाँ पे क्या रहेगा हमारा? इसके लिए हम लोग लेते हैं बार चार्ट, क्लस्टर बार चार्ट, and we'll try to add this one. Okay. Do you like the everyone idea of creating this blank structure first? What do you say? We have only 7 or 9 or 8 people are there, but what do you say? Do you like this idea? In this way, we can definitely put the things very easily. Yes or no? Right? So structure agar ready hai, so it's very easy for me. Like just I need to create. I know what I have to showcase, and I don't have to worry about the designing part. Designing is already done by the AI, and we are just adding the actual information here. Right? Okay. Good. Good to know this. So destination name. What's my destination name? So destination name is available in a destination table, and I can move a destination name here. And what I want a count of booking maybe. सो बुकिंग का जो कॉलम है हमें कहाँ पे मिलने वाला है? इट्स इन अ फैक्ट टेबल. So we can definitely use this booking ID into x-axis. And look at this here. I got a destination name, or you can also use. It was a Yes, I think it was a Europe tour was the highest one. But why Europe tour is not coming here? Acha, okay, okay, fine. Because I selected 2024, Goa was the highest, the first choice. 23, again Goa was the first choice, right? Now I want to add some values here. So how we can add a values? So I can go to the formatting of this data part, and I can just simply add here. So this is my booking. So count of booking. So name is definitely title is not correct, so I'll definitely add here as a booking count. Or maybe I can go to the general format and I can have a complete customized title. So यहाँ पे देखिए आप, I selected this bar chart, format visual. Format visual में I have a two option, visualization and general. Go to general and simple go to title, and you can type here as a booking count by destination name. All right, and look at this here. You will get the answer here. All right, so far so good, everyone. All of you, we are just three more charts are remaining. It's a good opportunity. Okay, we'll do that as well. So उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? Let's say you don't want to showcase this. So ये किसका question था? All right, I'm not able to see the complete name, but it's a 5871. We can use the calculate part. तो यहाँ से आप इसको हटा दीजिए year को.
That was the fastest way. As I mentioned, that was the fastest way, but there is another way as well where you want to showcase in a separate line. So I'll go to the new measure. All right. I selected the fact booking table. The table tool was appearing and I created a new measure. New measure is what? Creating a formula, writing a formula here, right? So यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं अभी? We are going to write रेवेन्यू पी वाई. रेवेन्यू पी वाई दे देता हूँ मैं यहाँ पे. और इसका हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे कैलकुलेट. A conditional calculation. I want to do a revenue calculation, but for the period last year, same period last year. So sum of which column? Sum of dim. It was a sorry. It was a fact booking, and fact booking में हमें क्या मिल रहा है इसमें? Total revenue. It was a fact booking, comma, and then I can use as the same period last year for the filtering part. And here I'm going to write dim date and a date column. And look at this, close bracket, close bracket. So this is my revenue PY. Yes, yes, we can do formatting as well. Formatting, there is no limit, right? अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? We have a total revenue, and now we can add a revenue PY here. And look at this now. So we can see the revenue PY as well. All right. Now let's say you want to see some, like some dotted line for this. For some dotted line for this. तो इसके हम लोग क्या करेंगे? अभी अगर मैंने 24 को सिलेक्ट किया तो इट विल गिव मी द राइट पिक्चर. So I have a 24 selected and then I have a 23. So 23 is coming as a revenue PY, previous year. Now it's a previous year, so I'll go to the formatting and I'll go to the line. और यहाँ पे हम लोग लेते हैं revenue PY and instead of this solid line, I'll make it as a dash. Dash बना देते हैं या फिर dotted line will be good. हाँ, dash ले लीजिए, dotted line लीजिए, जो भी आपको लेना है ये. So in this case, you will have a comparison of a previous line. So these are the both are the same. Look at this, sir. If I use this, if I use the same thing, अगर मैं इसको यहाँ पे previous year की बजाय if I use a year column into legend and then if I exclude this, I'll have a same answer here, right? So got the answer, everyone? Someone has asked this 5871. You have asked me the question for this. So is this clear? So you can use a legend and then you will get a same thing, but you can use this calculate DAX in order to create the same period last year revenue for same period last year. Okay, clear this now? ठीक है. If I click on a Goa, for example, here, so this is a Goa's I can see. So this one is my current year. Goa का यहाँ पे कुछ revenue नहीं था. There was a no revenue in the September. And if I select, let's say, Europe tour, I'll see some broken line here. It's not like we have a incorrect data. It's something like there was a no revenue in the month of July, but there was a last year there was some revenue here, right? So something like this you will able to see. So this is the interaction which is not there in Excel dashboards, right? Clear, everyone, all of you? यहाँ तक बात समझ में आई है सभी को? We can also give a like colors matching with our this one. So अभी जो यहाँ पे black आ रहा है, you can definitely go to the formatting part. Check here, like it's a font color, it's a background border, but I think उसमें selection के लिए color नहीं दिया है यहाँ पे, right? So that is available in a new button slicer. You will see here as a button slicer. ये जो button slicer है इसमें आप उसको change कर सकते हो, right? But because of the space, I'm using this old one. ठीक है? All right. Now, finally, three things: one, two, three. So, do not leave the session. You already have this practice file. You already have a data set link. So, data set link को आप क्या कर सकते हो? आप लोग download कर लीजिए, and you can always do a practice by watching the video, right? So, यहाँ पे आप properly इसको देख सकते हो ये वाला part. ठीक है? All right. Now I have three things to showcase you. One is booking by trip type, booking by channel, and agent performance here. All right. So यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले यहाँ पे बनाते हैं हमारा डोनेट चार्ट. डोनेट चार्ट ले लेंगे यहाँ पे हम लोग. एंड आई वांट टू सी द बुकिंग बाय ट्रिप टाइप. सो ट्रिप टाइप मुझे कहाँ पे मिलेगा? डेस्टिनेशन में. आई मूव दिस इन अ लेजेंड एंड वैल्यू में मैं डाल देता हूँ बुकिंग आईडी, but I want a count of booking. So I have a domestic. So domestic is how much? Around 62%. And I have an international, this one. Now this becomes slightly difficult for me to read. So I will add these names along with the values. So I'll go to the formatting. I'll show you one formatting for this. Detail label
Instead of only data and percent, I'll showcase all detail label, but I'll make sure legends are off. So look at this now. International 37%, and then domestic 62%. So we can definitely have a quick here count of booking ID. Again, you can definitely go ahead and general in a general you can change the title. So booking count by and give a readable booking count by trip type. All right. Again, Control C, Control V, copy of this, and I want to see the booking count by channel. So instead of this, inside the visual, instead of trip type, I'll go and change to this to channel. So I got this as per the channel, and again I'll go to the general, और यहाँ पे जाके मैं क्या करूँगा, I will change this booking count by channel. All right, look at this here. All right. Now, finally, I want to showcase a table for the agent performance. अच्छा, this is a complete interactive. Huh? So if I select here as a WhatsApp, I can see WhatsApp से मुझे इतना revenue मिला है. I got a 53 booking. Walk-in, I got around this much. There's a revenue. There is a like 100 customers overall. Rating. Walking का कितना rating है? 4.35. But WhatsApp 4.29. Agent 4, very less. Phone again less. So I think online website, it's very like alarm for us, like okay, this is not good. The rating is very low for the online website booking, but walking rating is the highest one. We can definitely showcase like this. Okay, so this is how immediately you will get the answer here. Final step, we are going to create this table. So table यहाँ पे हम लोग बना लेंगे. अब table में मुझे क्या डालना है? I want to showcase agent performance here. So I'll go to the dim agent. यहाँ पे हम लोग लेंगे agent name. Along with the agent name, what I want to showcase, how much revenue agent has generated. So total revenue. All right. What is the average rating? I'll add the average rating here. I can definitely rename this sum of, इसकी जगह पे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे total revenue. Sum of rating की जगह पे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे average rating, and I'll definitely change this calculation to average. And one thing I will do for this table, I'll go to the formatting style में जाके मैं इसको ले लेता हूँ minimal. ठीक है. एंड एक थोड़ा सा जगह बचा है यहाँ पे, तो अभी क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, वी कैन मे बी ऐड अ बुकिंग काउंट. सो बुकिंग आईडी, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ काउंट में. एंड लुक एट दिस, आई हैव जस्ट बुकिंग काउंट. शॉर्ट नेम दे देता हूँ मैं इसको यहाँ पे, बुकिंग काउंट. ऑलराइट, यहाँ पे इसका नाम दे दिया हमने बुकिंग काउंट. ऑलराइट, लुक एट दिस नाउ. सो माई all values, all tables are, all charts are added. Don't forget to save the file. So far so good everyone. Tell me, is this clear? I've created, as I promised, I've created this complete live dashboard in front of you. I've given you all the data set and everything which you can use, and there are some more things which you can work on, right? So as I mentioned, you can definitely create another page for agent performance, another page for customer insights, and for this you can definitely use um, so in our live dashboard there's a slide design. You can use the slide number 2, slide number 3, and so on. Clear this all of you? Tell me if you have any question. Anyone has any question here? No? All good? ठीक है. So this was the end of our this one, but finally एक चीज मैं और बता दूंगा, as we have a time, we can definitely publish this. I can save this here, and I can go to the publish, but for publish I required a workspace and Power BI services login. जैसे ही मैं वहाँ पे जाके अपना लॉगिन करता हूँ, वहाँ पे अगर मैं अपना ये बना लेता हूँ, अपना वर्क स्पेस बना लेता हूँ, वहाँ पे जाके मैं इसको शेयर कर सकता हूँ. दिस इज अ कंप्लीट अ डिफरेंट टॉपिक, बट in next coming weeks we'll cover according to the requirement, we'll cover this in detail as well. So what is your task now? Do the practice, comment and share this dashboard like on your social handle, and you can definitely tag data skill up. And if you have liked the session, do not forget to share with your colleagues and comment on the session, right? One last thing, if you're interested in learning this entire Power BI along with me, right, in a live class, hands on, then definitely you can
also plan to join a complete Power BI expert class. So this is a paid class which I conduct usually on Saturday, Sunday, which is offline and online as well. I'm based in Pune, so this is the location is FC Road, Shivaji Nagar. If you are nearby, please you're most welcome to visit there. And if you want to learn this like this, you want to create around 8 to 10 dashboard in detail along with me with all the data set, all the solved file and everything. Definitely and I'll recommend you to think on joining the this live class with me. Okay, so where you will learn, you will analyze, you will visualize, and you will decide with the confidence, right? So if you have any question, you can give a message or call on this number 8293 829378. All right, and if you have any question, you can definitely give a you can message there as well. All right, so someone has asked the question. All right, I've tried my best, to, balance between English and Hindi because few people have asked requested for English, few have for the Hindi, but I think it was good overall, right? Everyone, all of you, was that good, right? Okay. So someone has asked me about the solution file. So what I will do is I've given you the Google Drive link, right? Do you got the Google Drive link? Someone has asked this, Akansha. Okay, no, not Akansha, sorry. अभिषेक अभिषेक यू हैव आस्क्ड द क्वेश्चन सो मैं क्या करता हूँ अभिषेक इस फाइल को मैं उस गूगल ड्राइव के फोल्डर में ऐड कर देता हूँ सॉल्व फाइल को राइट सो यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर ओके विल दैट वर्क एंड आई थिंक इट शुड बी देयर अगर आप थोड़ा सा देख लेते हो एक बार okay it's a practice file I am going to share this solved file in that folder okay so maybe I can rename this as a solved file and I'm going to share this solved file also remember one thing if you're doing practice, then definitely you can share your file on a social handle. Like and you can definitely tag Data Skill Hub, so that will help us the world to know how the session was and how much you have liked. So Abhishek, can you try to download from that Google Drive folder? I've already added in that folder the solved file. Okay, and you can download from there. Any other question? Anyone has any question? Anyone wants to ask anything? Today's solved file only in a Google Drive folder. It's there in a Google Drive folder, right? So I've already shared the link. It's in a description, and you can definitely go in a description. You can download from there. You have a file. You have all the files: solved file, icons, slide design, PDF. There's one PDF also, which has all the business problem, table, how we can connect the table, relationship type, and I have also given you some DAX here for the future, like for further practice, how you can do the this one. And look at this here. There are some more ideas given how you can create a डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स राइट सो यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए मैंने काफी सारा आपको नोट्स दिए हैं इस पीडीएफ के अंदर में सो फील फ्री टू गो अहेड एंड एक्सप्लोर दिस राइट एंड यहाँ पे आप बिल्कुल जाइए और यहाँ पे अपना जो वो कंप्लीट करे द रिमेनिंग टू स्लाइड्स विच इज एजेंट परफॉर्मेंस एंड लाइक डेस्टिनेशन और कस्टमर इनसाइट्स ओके क्लियर एवरीवन ऑल ऑफ यू गुड फॉर द डे. So as I mentioned, if you have any plan to join the live class, feel free to message on this number. And if you know anyone who is looking for, like a detailed class, learn with the expert trainers and a hands-on training, if someone is looking for, feel free to share this information also. All right. Okay. So thank you so much, everyone, for joining this live class. Uh, have a nice and wonderful evening. And here you go. Good, good. And I'll see you in some next live session. Do not forget to comment your topic, so which I'll cover in a live session. Okay. All right. So bye everyone. Take care. Bye. Bye all of you.